Hello, you're watching Hornbill TV's Primetime Bulletin. Now headlines. Manipur civil organization Kokomi has called for a 48-hour general strike from Thursday midnight to protest the forced removal of state name from a government bus with journalists on board at Guadtabi in Imphal East District. Representing the Indian delegation, Union Health Secretary Punya Salila Srivastava, while addressing the plenary session of the 78th World Health Assembly on Wednesday, reaffirming its commitment to global health equity under the theme One World for Health. Several states have begun the process of identifying Bangladeshis staying illegally in various parts as a part of an exercise to deport the immigrants. US President Donald Trump announced Tuesday a $175 billion missile defense system dubbed the Golden Dome, appointing US Space Force General Michael Guidlane to lead what Trump described as a Manhattan Project-scale initiative. Now for the news in detail. Manipur Civil Organization Coordination Committee on Manipur Integrity, or the Kokomi, has called for a 48-hour general strike from Thursday midnight to protest the forced removal of state name from a government bus with journalists on board at Guadtabi in Imphal East District. Speaking to reporters, Kokomi convener Kuraijam Atoba said the decision to have the state's name removed from a state bus operating within the state itself was anti-Manipur and absolutely challenges the idea of Manipur and its historical and cultural identity. The people of Manipur demand to know under whose authorities and thoughts were the decisions taken, and the same should be clarified to the public within 48 hours, Kuraijam said. Kokomi demanded the resignation of Security Advisor Kuldeep Singh, DGP Rajiv Singh and Chief Secretary Prashant Kumar Singh, and also demanded the governor to tender apology for allowing his administration to delete the state's name from a government bus. Stating that the incident has undermined the pride and respect the name of Manipur deserves, he said such irresponsible decision and attitude towards the identity of Manipur has forced him to call a 48-hour general strike across Manipur starting today midnight, during which the governor must tender an apology and all three officials must resign. After the very unfortunate incident that had happened yesterday, during the media team who was heading towards Sirui Ukhrul for the coverage of Sirui festival, have been blocked or restricted by the Indian Army, and who asked to remove the name of the state called Manipur, which was written on the bus of Manipur State Transport, is very unfortunate. And after due deliberation and discussion with the Executive Committee's meeting held today, the Coordinating Committee on Manipur Integrity, Kokomi, today with the people of Manipur, has earnestly demanded an apology from the Governor of Manipur for allowing his administration to delete the name of the state from the state bus. And we also seek immediate resignation of the responsible top officials of the state who are under the governor's administration, that is the Security Advisor, the Director General of Police, DGP, and the Chief Secretary of the state, because they are responsible for all this decision that has undermined the identity of the state of Manipur, the name of the state, and its pride and respect that deserves the honor and due respect to the name of the state. Therefore, in condemnation and in protest against such a very irresponsible and anti-state decision taken by the state government, the Coordinating Committee on Manipur Integrity has immediately called upon a 48 hours general strike starting from today's midnight until the next 48 hours. And during these 48 hours, we
demand an apology from the governor of Manipur. We also demand the resignation of the security advisor, DGP, and the chief secretary of the state for their irresponsible attitude towards the state's identity. This act of the state officials and the administration trying to undermine the name of the state is nothing but they are surrendering the pride, the dignity, the legitimacy of the state to narco-terrorist groups who have been openly threatening to the people of Manipur recently during this arrangement of Sirui Lily Festival. The open threat issued by the KSO Delhi NCR president like Mr. Paujaku Guite and several other village volunteers, armed village volunteers, is not being handled by this administration, and rather than they are submissive, they are surrendering to those threats of the terrorist groups and trying to undermine and compromise on the state's identity, and this is not acceptable at any cost. And we therefore consider the present President Rule's administration in the state is nothing but an alien administration, an alien government arrangement. Therefore, we demand immediate withdrawal of this President Rule and immediate withdrawal of this kind of administration. We need the people of the state to govern and rule over the state because they understand the value, the significance, the importance of the name of its state, the identity of the state, which cannot be compromised at any cost. However, those alien officials who don't understand the value, the history, the polity, the sentiments, the cultural values, the ethos of this state, just don't hinder to even take such a decision to remove the name of the state from the state buses, the name of the registration number starting with MN. And all this act is nothing but an irresponsible act by an alien administration who undermines the value of the state. Therefore, we demand an apology from the governor. We also demand the immediate resignations of all the responsible officials of the state. And within this 48 hours, we are expecting a very clear explanation as to why they decided to remove the name of the state from the state buses. Thank you. Uttar Pradesh has set a target to plant 35 crore trees under the tree plantation campaign, which will begin from July 1 to till July 7. In a special conversation with HornbillTV, UP Forest Minister Dr. Arun Saxena also informed that after bird flu virus was detected in Gorakhpur Zoo, all zoos and parks in the state have been closed. The government is awaiting investigation reports, after which decision will be made whether to reopen them or not. उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश भर के जो पार्क हैं, चिड़ियाघर हैं या जो भी हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं। क्या लगता है बर्ड फ्लू कब तक ही रहेगा? देखिए, आज से लगभग एक हफ्ता पहले गोरखपुर चिड़ियाघर में एक एनिमल की तबीयत ख़राब हुई, उसकी डेथ हो गई। हमने IVRI के डॉक्टरों को बुला के जाँच करवाई और उन्होंने उसकी जाँच की और सैंपल भोपाल भेजा गया। वहाँ से रिपोर्ट आई कि इसे बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू के आते ही हमने सूचना अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बहुत ही संवेदनशील हैं, उन्होंने तुरंत हमको डायरेक्ट किया कि सभी ज़ू को एक हफ्ते के लिए बंद कर दो। जितने भी ज़ू में एनिमल्स हैं सबका हेल्थ चेकअप कराओ। कोई जानवर ज़रा भी बीमार हो उसको आइसोलेट कर दो, उसे अलग रखो और वहाँ पे डिसइंफेक्शन कराओ, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कराओ, चूने का स्प्रे कराओ और उसके अलावा जो भी कार्यकर्ता उन जानवरों की देखभाल में हैं वो सब मास्क लगा के जाएं, अपने PPE किट पहन के जाएं और जो कर्मचारी हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाए। किसी को भी ज़रा भी परेशानी हो तो उसके इलाज की पूरी व्यवस्था करो और जानवरों की देखभाल करो कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ज़रा भी किसी जानवर को हो तो उसे अलग कर दो, ख़ास तौर से चिड़ियों को, डक्स को, क्योंकि बीमारी चिड़ियों में ज़्यादा होती है। उसके साथ ही साथ उनके निर्देशानुसार हमने एनिमल्स के खाने का टेस्टिंग करवाया कि खाने में तो कोई ख़राबी नहीं है। जहाँ से खाना उनका आता था उसकी जांच करवाई, पानी की जांच करवाई और हम वहाँ पे पूरी देखभाल रख रहे हैं। चिड़ियाघर को बंद कर दिया ताकि ये इन्फेक्शन औरों को ना फैले। क्या लगता है सर, ये हालात कब तक सामान्य हो जाएं? कब तक लोगों को मौका मिलेगा चिड़ियाघर या पार्क में जाने का?
देखिए, कुछ और एनिमल्स भी थे जिनका हमने टेस्ट के लिए भेजा है, उनकी रिपोर्ट्स अभी भी अवेटेड हैं, रिपोर्ट्स आई नहीं हैं। और तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 1 सप्ताह और बंद कर दिया गया है कि वो रिपोर्ट्स भी आ जाएं और देख लिया जाए। तब उनके 1 हफ्ता देखने के बाद और जो सैंपल गए हुए उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से लिया जाएगा। सर, लास्ट ईयर जो वृक्षारोपण अभियान चला था उसमें 35 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन उससे ज़्यादा 36 करोड़ से भी ज़्यादा लग गए थे। इस बार भी 35 करोड़ का लक्ष्य है और जिस तरह से हरियाली का जो उत्तर प्रदेश में दायरा बढ़ता जा रहा है, क्या माना जाए ये सब उन्हीं की कवायद की वजह से हुआ है? जो पिछले साल का टारगेट था और इस साल जो टारगेट है, क्या माना जाए इस साल भी टारगेट से ज़्यादा ही वृक्षारोपण होंगे? पिछले साल जितना टारगेट था उससे ज़्यादा लगाया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछले 3 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं, जो कोई मामूली बात नहीं है। और इस बार हम और ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो सब मिला के पूरे देश की जितनी आबादी है उतने इन 4 सालों में पेड़ हो जाएंगे। और हम पेड़ों के लगाने के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, हम इसका पूरा ख्याल करेंगे। और हरियाली भी बढ़ी है, देश के अंदर नंबर 2 पे हरियाली उत्तर प्रदेश की बढ़ी है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता थी और जिस तरह से भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया, पाकिस्तान में घुसकर जो है दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया, उसको लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। आप भी अपने विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं, कब ये तिरंगा यात्रा निकलेगी, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र की जनता निकाल रही है, उसमें हमें भी उन्होंने इनवाइट किया है, हम भी पहुंचेंगे। और हम इस तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर में जो सैनिकों ने बहादुरी दिखाई है, जो देश का सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए उन सैनिकों का सम्मानजनक, उनके सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली है। देश की एकता अखंडता के लिए निकाली जा रही है। मोदी जी ने जो कार्य किया है उसके सम्मान में वहाँ की जनता निकाल रही है, हम भी उसमें जाएंगे। आप डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हैं जिन्होंने बर्ड फ्लू को लेकर बात की, वृक्षारोपण अभियान को लेकर बात की और खास तौर से जो तिरंगा यात्रा है उसमें आप शिरकत करने जा रहे हैं। और कहना इनका साफ कहना, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय सेना ने देश का मान बढ़ाया है, उसको लेकर ही वो तिरंगा यात्रा में शिरकत करने जा रहे हैं। वीडियो जल्दी विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। We'll take a short break, so stay tuned. State Institute of Hotel Management Dimapur Academic Year 2025 to 26 निमित्ते एडमिशन शुरू होइছে। SIHM Dimapur ऑफर কৰি আছে हॉस्पिटैलिटी और होटल एडमिनिस्ट्रेशन दे 3 साल लगा बैचलर्स डिग्री कुंडू NCHMCT লগত एफिलिएटेड আছে और डिग्री सर्टिफिकेट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली পৰা अवार्ड কৰিব। फूड प्रोडक्शन और फूड एंड बेवरेज सर्विस लगा 1.5 year डिप्लोमा प्रोग्राम भी ऑफर কৰি আছে SIHM Dimapur। SIHM Dimapur laga mission do quality education और personal growth ase। Institute laga dedicated faculty, experienced mentors और hands-on learning environments pra students can get training di ase। Etu egla nohoi yate career ke age loi jabole nimite state of the art infrastructure, top package, taga laga bishi bhal placement, maiki mota nimite alag alag hostels और strong industry partnerships bhi di ase। अपनी लग्जरी रिजॉर्ट मैनेज কৰিবলৈ নহলে ক্ৰুজ লাইন দে शेफ হ'বলৈ सपना আছে বলে SIHM ডিমাপুৰ আপনি के सक्सेस কৰিবলৈ লঞ্চ পেড আছে। তো নাৰুকিনা জলদি কৰিবি এডমিশন খোলা আছে আৰু বিজন গাড়ী লবলৈ কল কৰিবি 9233895656 9863177951 দে। Visit www.sihmdimapur.com। Every day goes through 136 quality checks, giving you a thick and tasty, perfect cup of tea. No wonder Nestle Every Day is your #1 choice.
Welcome back. Haryana Chief Minister Nayab Saini on Wednesday paid a courtesy visit to Prime Minister of India Narendra Modi in Delhi. Posting on X, Saini said he thanked the Prime Minister for destroying terrorist hideouts through Operation Sindoor and giving a clear message to Pakistan. Saini further wrote meaningful and positive discussions on various important issues related to development of Haryana were held during the meeting. He said, under the guidance of the Prime Minister, the state government is committed to continue development work at a fast pace in the state and contribute to the creation of developed India, developed Haryana. U.S. President Donald Trump announced Tuesday a $175 billion missile defense system dubbed the Golden Dome, appointing U.S. Space Force General Michael Guidlin to lead what Trump described as a Manhattan Project-scale initiative. During the Oval Office announcement, flanked by U.S. Defense Secretary Pete Hegseth and Guidlin, Trump revealed that the project would be completed within 3 years and would protect the entire continental United States, including Canada, from aerial threats, news agency reported. The ambitious system is designed to create a comprehensive network of satellites capable of detecting, tracking and intercepting incoming missiles. Trump touted his system would be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. I promised the American people that I would build a cutting-edge missile defense shield to protect our homeland from the threat of foreign missile attack. And that's what we're doing. Today I'm pleased to announce that we have officially selected an architecture for this state-of-the-art system that will deploy next-generation technologies across the land, sea, and space, including space-based sensors and interceptors. And Canada has called us and they want to be a part of it. So we'll be talking to them. They want to have protection also. So as usual, we help Canada do the best we can. This design for the Golden Dome will integrate with our existing defense capabilities and should be fully operational before the end of my term. So we'll have it done in about 3 years. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. And we will have the best system ever built. As you know, we helped Israel with theirs, and it was very successful, and now we have technology that's even far advanced from that, but including hypersonic missiles, ballistic missiles, and advanced cruise missiles. All of them will be knocked out of the air. We will truly be completing the job that President Reagan started 40 years ago, forever ending the missile threat to the American homeland, and the success rate is very close to 100%, which is incredible when you think of it. You're shooting bullets out of the air. We'll take another short break, so stay tuned for more news. Local aru seasonal sabji khato environment aru gaon nimite bishi labh ase ahibi janibo. Local sabji khato khabole bi bishi mitha ase kile nimite itu sabji khan thik pra pakia piche dehi bikiri kure. Local sabji de dawai khan na chulai aru nutrients bishi thakya nimite ami khana gaon ke bhal rakhe aru weather laga hisab te ami khan kisim kisim bi khabo pai. Local sabji khan dam bi bishi komti thake. Khana khan alag alag jaga pra ahe aro homoy carbon bishi philai de itu nimite local khato environment karone bi bishi bal ase. Dusra jaga pra ahya khana to bishi din polai kina ahe aro bishi bar biya bi hoi jay. Itu nimite local khana khato food wastage bi komti hoy. Aro akhirte local saman kinya pra nijor manuke bi bishi modot kore. তহতে নাম ভৰ্তি কৰিলি নে কিহৰ নাম ভৰ্তি আকৌ
ইহঁতে একো গমেই নাপায় দেখোন। তেনেহলে শুন, অসম চৰকাৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমৰ চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আৰু কলেজসমূহৰ বাবে মেডিকেল টেকনলজি অৰ্থাৎ পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে। লগতে বেচেলৰ ইন ফাৰ্মাচী আৰু ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচীৰো প্ৰৱেশ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে। পিছে পেৰামেডিকেলৰ কি কোৰ্চ আছে কচোন ভালকৈ? ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে, যেনে মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনলজি, মেডিকেল ৰেডিঅলজি এণ্ড ইমেজিং টেকনলজি, কাৰ্ডিঅ' কেয়াৰ টেকনলজি, ট্ৰমা এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনলজি, ICU টেকনলজি, OT টেকনলজি, এনেস্থেচিয়া এণ্ড ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ টেকনলজি, ব্লাড বেংকিং টেকনলজি, ডায়ালিচিছ টেকনলজি, ফিজিঅথেৰাপি আৰু অপ্টিমেট্ৰি। বল তেনেহ'লে আজি নামভৰ্তি কৰোঁ বল। আপুনিও এই সোণালী সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। বিজ্ঞানৰ দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈ এই প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ বাবে নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰে। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আজিয়ে অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাওক। আমি সকলোৱে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত হৈ নিজৰ জীৱন গঢ়ো আহক। Welcome back. The Enforcement Directorate on Wednesday told Delhi court that Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi received Rs 142 crore as proceeds of crime in the National Herald money laundering case. The statement was made by Additional Solicitor General S.V. Raju, who appeared on behalf of the ED during preliminary submissions on whether the court should take cognizance of the agency's charge sheet. The ED, which recently filed the charge sheet in the matter, is currently making its initial arguments before Special Judge Vishal Kokni. According to ASD Raju, a prima facie case of money laundering has been established against the Gandhis and other accused individuals. The court proceedings follow a long-standing investigation that began after BJP leader Subramanian Swamy filed a private complaint on June 26, 2014. The ED formally launched its probe in 2021 after the magistrate court took cognizance of Swamy's allegations. In Wednesday's hearing, Judge Kokni also directed the ED to provide a copy of the charge sheet to Swamy, who remains a key complainant in the case. Meanwhile, the legal representatives for Sonia and Rahul Gandhi requested the court to list the matter for the next month, allowing time to prepare their submissions in response to the ED's charges. Several states have begun the process of identifying Bangladeshis staying illegally in various parts as a part of an exercise to deport the immigrants. In Odisha, Law Minister Prithviraj Harichandan on Monday said the state government has issued a direction to all district collectors, coastal security agencies and formed a special task force to coordinate the process of identifying the undocumented Bangladeshi immigrants. The state government has designated the STF as the nodal agency to coordinate and monitor the developments, besides working closely with district-level officers, coastal security forces and other enforcement units. The Maharashtra government is also conducting a similar exercise, with the Mumbai police saying that 300 illegal Bangladeshis have been deported so far in recent times. Police said 766 such illegal immigrants have been arrested so far this year. 18 lakh ration cards were cancelled till May 18, officials said, adding that most of the holders were likely illegal Bangladeshi residents. In Mumbai, 4.8 lakh ration cards were cancelled. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma had, on April 30, directed police to launch a campaign against illegal Bangladeshi immigrants and to ensure their deportation. Subsequently, a first batch of 148 illegal Bangladeshi immigrants rounded up by police was sent to West Bengal on a special flight as part of the deportation process, police sources said. श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री मनवीर सिंह एसपी भिवानी जी के दिशा निर्देश पर आज थाना शहर भिवानी में एक विशेष दस्ते का गठन करके हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, जो दादरी रोड पर कूड़ा डंपिंग प्लांट के सामने जो गया है, जिनमें काफ़ी व्यक्ति रह रहे हैं जो आसाम के रहने वाले, जिनके बारे में सूचना थी और शक था कि हो सकता है इनमें कुछ रोहिंग्या भी छिपकर यहाँ रह रहे हों। तो उसमें हमने यह सर्च ऑपरेशन किया है।
हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे एडीसी साहब ने भी इसमें हमारी सहायता की और 3 ऑपरेटर हमारे साथ जो ऑनलाइन आधार चेकिंग के लिए हमारे साथ अपॉइंट किए। तो हमने एक संयुक्त टीम बनाई जिसमें हमारे पुलिस मुलाजमान वर्दी में भी और सिविल में भी, जैसे आपको मैं खुद नज़र आ रहा हूँ, और अन्य रूप से भी यहाँ मौजूद थे ताकि कोई शरारती व्यक्ति इधर उधर भागने का प्रयास करे तो तुरंत काबू किया जा सके। तो सुबह हमने 5 बजे से सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। सर्चिंग अभी हमारी जारी है, 10 दिन के चेक कर रहे हैं। अभी तक जो हमने आधार कार्ड का जो प्रोसेस अपनाया था इनको इनकी आइडेंटिटी चेक करने का, उसमें कुछ डाउटफुल व्यक्ति मिले हैं जिसमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं जिनको हमने अपने साथ रखा और आइंदा इनके दस्तावेज चेक करेंगे और ठीक जैसी आगे रिपोर्ट दस्तावेज आएगी उसके आधार पर इस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें बच्चे कितने हैं? नहीं, अभी बच्चों को हमने इसमें शामिल नहीं किया है, केवल पुरुष और महिलाएं जो वेस्ट उनको हम शामिल कर रहे हैं। उसके बाद आगामी कार्रवाई में जो बाल कल्याण समिति है उनके सदस्यों के साथ लेके बच्चों का प्रोसेस भी अपनाया जाएगा। बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक स्टेटमेंट जो भारत जो है कोई धर्मशाला नहीं है, इस तरह से जो नागरिकता देना कोई उनको वापस भेजना चाहिए, किस तरह से? बिल्कुल, इसमें हमारा पूरा जो पुलिस प्रशासन है पूरे प्रदेश स्तर पे, जैसे आपने देख रहे हैं हर जगह पुलिस की कॉमिंग चली हुई है और हम पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं और दिल से कार्रवाई कर रहे हैं कि जो भी कोई अप्रवासी है जो गलत तरीके से अवैध तरीके से आगे भारत में जिसने अपना ठिकाना बनाया उसको हम सर्च करेंगे, उसको ढूंढ कर निकाल लेंगे और वापस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको वहीं भेजेंगे जहाँ से वो भाग कर आया है। कितनी टीमें सर बनाई गई इसमें अगर बात करें तो? और सिविल डिफेंस में जो पूरा सर्च अभियान कुछ अभी हमने यहाँ इसमें 5 टीमें इसको चारों तरफ से कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाई थी, जिसमें कुछ मुलाजिम हमारे सिविल में, कुछ हमारे यूनिफॉर्म में, कुछ हमने जैसे ट्रैक सूट वगैरह में, ताकि जो इजीली कोई आदमी भागने का प्रयास करता है तो उसको इजीली काबू कर सके, और कुछ आसपास की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखने के लिए। अब जैसे यहाँ आपने देखा कि इतनी झुग्गियाँ हैं और यहाँ सरकार की तरफ से सरकारी सुविधाओं का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं कि लाइट जो इनके द्वारा प्रयोग की जा रही है, कोई बिजली का मीटर नहीं है और ये गलत तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हैं सरकारी संसाधन। इसके बारे में एसडीओ बिजली विभाग को भी हमने सूचित किया, उनकी टीम भी मौके पहुंचने वाली है और उनके अनुसार भी जो कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। That's all for now. You're watching Hornbill TV.